हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति बत्रा, मिस बॉटनिस्ट. हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाय नीरज, हाय प्रेरणा, हेलो. Good afternoon, Neeraj. Hi, Arpita. A very, very good afternoon. Am I clear? Am I visible? Sorry. Am I audible and visible to everyone? Hi, Nitya. Audible, visible? Very much clear. Hi, Piyush. Hi, Nitya. I am doing superb. Hi Anita Prajapati. Good afternoon, biochemistry. Hi Simran. All right. Hi Arpita. Okay. A brief introduction. Those who are new to this class, welcome to NEET Elixir. So I am Swati Batra. I have done my masters from Delhi University. I have produced AIR 13, 22, 32, 33 this year, and next year AIR 1. Are we going to produce that magic? All right. Today we have to start with biological classification. Yes. Already Dr. Sachin Kapoor has covered living world, and now sir is doing plant, which kingdom? Animal kingdom. So I'll be taking up the living world. No, I'll be taking up biological classification and plant kingdom. Hi Saurav, good afternoon. Hi Monica, how are you all doing? Hi Prashant. All right. Hello, good afternoon Divya. So we are going to start with biological classification today, right? चलिए मचाते हैं. Now, all of you know that 2 p.m., 3 p.m. Dr. Sachin Kapoor will be taking the class, and then ANOOP sir. All right. So we have unit 1, and in unit 1, this is already being taken up, right? And biological classification I am going to take up, and this plant kingdom too. Then this will be dealt with. Dr. Sachin Kapoor is dealing with animal kingdom. Okay. So I have a very big surprise for you people. I am going to show you NCERT of AIR 22. Yes, how she wrote everything in NCERT. So you want to have a look? You want to have a look? I want to see some likes. Hi Shoaib, I'm doing good. What about you? All right. So are you ready? Okay. Have a look. Look here. This is how they write each and every point, even the extra point, a minute detail in NCERT. Suppose this was a question asked in NEET examination. So this particular personality, she wrote this in her NCERT only. Look how clear it is. That means, again, we don't have to go through the notes. We have to just look at the NCERT, right? Look how beautifully she wrote all the things. Are you getting it? All right. तो चलिए मचाते हैं और हम भी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आज का टॉपिक है किंगडम सिस्टम, राइट? चलिए, so let's start with kingdom system. What is classification? The scientific study. Old NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, बिकॉज अभी NTA के अकॉर्डिंग, NMC के अकॉर्डिंग कोई लेटेस्ट सिलेबस का डिटेल नहीं आया. तो जो कुछ डिलीट भी हुआ है, that can also be asked in the NEET examination. So we have to go according to old NCERT. Hi Durga Prasad. All right, now I'm starting with it. So classify करना easy.
हमें क्लासिफाई क्यों करते हैं? Why do we classify? Because we want to make the things easier for us, right? Okay. This is easy or this is better? Which is easier? If you want to relocate certain things, which one is better? Obviously, this one, right? So, why do we actually do classification? Because we want to make the things simpler. We want to make the things easier, right? Okay. So, as you already know, you must have done in the living world that we have the hierarchy. We have kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. If we talk about the descending order, and if you talk about the ascending order, then we start from what? We start from species, right? Okay. Now, this we've already have shown you the NCERT of the topper, right? You have to also make the notes like this, okay? So, NCERT, all of you have NCERT in front of you. Can you open the first page of biological classification? Can you open the first page of biological classification? All right. The first page, what does it say? The first line. At the dawn of civilization, मतलब जब civilization start हुई, dawn मतलब वो वाला dawn नहीं है, dawn मतलब कौन से वाला dawn है? At the start of the civilization, there were several attempts made to classify the organisms, but these attempts were not scientific. ये attempts scientific नहीं थे. Why? Because the organisms were classified according to their usage. Usage के according मतलब which organisms are used for food, for clothing, for shelter. So are these attempts scientific or not scientific? Are these scientific or not scientific? They are not scientific, right? So यही लिखा है यहाँ पे, since the dawn मतलब at the start of civilization, many attempts were made to classify the organisms, but these attempts were not scientific. Why? Because the organisms were categorized according to their usage. कौन से organisms use हो रहे हैं किसके लिए? Food के लिए, clothing के लिए, shelter के लिए. तो ये सारी चीजें ये scientific attempt nahi the. Now tell me in the chat box, फटाफट से, who was the first one to give a scientific basis of classification? बताइए, बताइए, boys and girls, be attentive. Who were the first ones to give a scientific basis of classification? Scientific basis of classification. कौन जिसने किसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था? बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, मुश्ताक अली, एरिस्टोटल, एक्सीलेंट. ओके, किसने बोला लीनियस? नो पीयूष, लीनियस ने सबसे पहले ही रेज्ड द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द किंगडम सिस्टम. सो अगर किंगडम सिस्टम इज आस्क्ड, then you are going to answer Linnaeus, right? But if it is asked that who was the first one to give a scientific basis of classification, then we are going to talk about Aristotle. Aristotle, he was the first one to give a scientific basis of classification, right? He divided the organisms into two categories. See, look how beautiful the slide is, how beautiful this animal looks, right? So, Aristotle divided the organisms into two categories. You have to be very, very careful in the NEET examination. Planty animalia word use नहीं किया. क्या word use किया? Plants, animals, right? Planty animalia term किसने use किया? The term was used by Linnaeus, right? So यहाँ पे he divided the organisms into two categories. कौन सी categories? Plants and animals, right? So plants को divide किया था किन basis पर? Plants को divide किया था on the basis of habit.
हैबिट और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। और कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था? हर्ब्स, then we have shrubs, and then we have trees. Herb, shrubs and trees. Habit मतलब प्लांट दिखता कैसा है, उसका एक्सटर्नल फीचर कैसा है, राइट? तो आप देखिए, लुक हियर, हर्ब्स मतलब grasses having a very soft flexible stem. Then shrubs and the trees, they are woody, right? woody होते हैं shrubs and trees, लेकिन shrubs की हाइट छोटी है, trees की हाइट बड़ी है, right? ठीक है? सो हैबिट के बेस पे, ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है सबको? प्रेरणा, नित्या, दिव्या, प्रशांत, is it clear that we have 3 categories: herbs, shrubs and trees? In the plant kingdom chapter, we are going to study Theophrastus also took the same criteria, but Theophrastus, he divided the plants into 4 categories: herbs, shrubs, undershrubs and the trees. So that we are going, the nits and bits, we are going to deal with this in the chapter plant kingdom, right? Now animals की बात करें तो एनिमल्स की बात से तो zoology आती है, राइट? और zoology बोलते ही गॉड ऑफ zoology, तो मेरे लिए गॉड ऑफ zoology कौन है? Any guesses? Dr. Sachin Kapoor. And here, sir is here. Hello जी, hello बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? Hello Swati ma'am, thank you so much for inviting me to your session. Great जी, wonderful. कौन सा टॉपिक चल रहा है मैम आज? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मैम आई थिंक काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत, yes. हर साल नीट में इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हेलो प्रेरणा, हेलो नित्या, हेलो प्रशांत, देवांश, नीरज कुमार. प्रेस द लाइक बटन यार, व्हेन बोथ ऑफ अस आर टुगेदर ऑन द स्टेज, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो फिर लाइक्स की तो बौछार होनी चाहिए. So I think ma'am today is the first class of this chapter. Yes, na? sir. Great. So it's just the beginning. Plants and animals, Aristotle's classification. Wonderful जी. Hello. नमस्कार, सलाम आ जाना चाहिए स्क्रीन पे जल्दी से. Great. Hello देवांश, प्रेरणा. We thought that हम लोग jointly जो है ये चैप्टर पढ़ाएं आप लोगों को. Shall we do that? Ma'am will do all the parts related to Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia, as she said. I'll be discussing. Right ji? Send me a thumbs up sign in the chat box. Send me some cakes and candies so that we get enough of energy. And promise that you all have to be regular in botany classes as well as in zoology classes. And ma'am, I think very soon we are coming up with our special classes also. Yeah. So tomorrow I'll be taking up. Tomorrow at 7 p.m. I'm taking the special class of important questions of sexual reproduction in flowering plants. Okay, important questions of sexual reproduction in flowering plants tomorrow at 7 p.m. on the Unacademy Plus platform. So you have to install the app and you have to follow Swati ma'am's profile as well as my profile. Sir, why don't you tell them about the plus courses also we are launching? Oh yes, physiology we are, yes. 1st of August. Yeah, 1st of August, yes. We are going to launch our plus batch in which we are going to boost your biology. Yeah. Specialist of botany and specialist expert of zoology. 360 on 360 sir. 360 and 360 से कम हम नहीं मानेंगे सर. बिल्कुल जी. बायो में 360 में से 360 नंबर लाने हैं. And those of you who are planning to join the plus courses, install the Unacademy app in your phone and then you have to follow the instructions, right? And today 3 p.m. I am meeting with the animal kingdom and ma'am is going to continue with the biological classification. Thank you so much ma'am. nema तो बता के जाइए सर अब. Okay जी, okay. When you talk about enema and emma, you get any idea related to something related to anemia, something related to blood? कुछ आइडिया मिलता है इस चीज से. सो बहुत पुराने टाइम पे अर्लियर व्हेन दे यूज्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, दे वर नॉट लुकिंग फॉर दोज वेरी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स लाइक द मॉडर्न मेथड्स व्हिच वी फॉलो. अर्लियर इट वाज ईदर बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और देयर यूटिलिटी, है ना, जैसे हर्ब्स, श्रब्स, उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया इफ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द ब्लड और नॉट हैविंग द रेड कलर ब्लड. So gradually ma'am will take you through this entire journey of classification and I'm sure you're going to enjoy this thing,
Right, Faizan, Nitya? Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Right, ji. Bye bye. See you all at 3 p.m. also. Bye, guys. All right. Okay, so let's continue. Okay, so where were we? Animals mein to sir has already told you that Aristotle, what he did, he divided the animals. So this I told you about herbs, shrubs and trees. Animals को RBC के बेस पे, presence और absence of, right, RBC के basis पर we classified into two categories, anemia without RBC, anemia, and enema, animals having RBC. So we have two categories, enema and anemia. So this was all about Aristotle, who is the father of zoology, father of biology, right? Can I go further? All right. So going further, so who was the first person to attempt a more scientific basis of classification? Who was the first one? Can I get the answer in the chat box, please? Can I get the answer in the chat box? Aristotle, Linnaeus, Whittaker, Darwin. Okay. So we have the no. अभी तो आंसर ही नहीं मिला. भाई जल्दी करिए. 10 seconds में बॉटनी और zoology का क्वेश्चन you should be able to answer. कि नीट एग्जामिनेशन के अंदर बॉटनी आपकी 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में खत्म हो जानी चाहिए. I can solve botany in 5 minutes, you know. 5 minutes. I'm not boasting myself, but I can solve botany in 5 to 10 minutes. नीट में 15 minutes लग सकते हैं. All right. First, Aristotle. Excellent. Aristotle. Amazing. Next question. Aristotle divided the animals. अब आपको लग रहा होगा कि why ma'am is teaching the basics? Because I tell you कि नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से ही उठाए जाते हैं. हमें लगता है वी आर गोइंग टू स्टडी द हाई फाई थिंग्स एंड लेट्स गो इनटू द मेडिकल्स ऑफ जेनेटिक्स, लेट्स डू द ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस. नो, समटाइम्स दे डू आस्क कि भाई जेनेटिक्स में मेंडल ने कौन से ईयर पे काम किया था? 1856 टू 1863, राइट? अब आप मुझे बताइए, आप लोगों ने पहले से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, राइट? तो मैं आपसे ऐसे रैंडम क्वेश्चन पुट करती हूँ आज. कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए. एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया आर मोटाइल और नॉन मोटाइल? साइनोबैक्टीरिया, आज मुझे इसका आंसर दी. साइनोबैक्टीरिया आज बताइए मुझे कि मोटाइल और नॉन मोटाइल. बताइए चैट बॉक्स में, देख रही हूं मैं आपका आंसर. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि क्या साइनोबैक्टीरिया मोटाइल है या फिर साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल है? हाँ जी, नीरज बताइए. ओके, चलिए मैं ही बता दूं क्या इसका आंसर आपको. ऑल राइट, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Nobody? Motile. Shubham is saying motile. Anybody else who wants to try? Or everybody agrees with Shubham? कि Shubham जो कह रहा है वो सही है, right? Motile. Okay, प्रेरणा motile. Now open your NCERT. Cyanobacteria पे open करिए. Open your NCERT everyone. NCERT open करिए. Cyanobacteria पे NCERT open करिए और देखिए, right? Just a minute. ओके, तो एनसीईआरटी ओपन करना आपको और आपको देखना है एक बार कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है. साइनोबैक्टीरिया इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम. इफ मोटाइल लिखा है. इफ मोटाइल सिर्फ इट इज प्लेइंग सेफ. टिल टुडे there is no cyanobacteria which is discovered which is having flagella. कोई ऐसा साइनोबैक्टीरिया नहीं डिस्कवर हुआ. इसका मतलब if a question comes in the NEET examination, are cyanobacteria characterized by motile stages? No, cyanobacteria are characterized by non-motile stages throughout their lives.
पूरी जिंदगी मतलब फ्लैजेला हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला नहीं है, राइट? फ्लैजेला इज एब्सेंट, right? Is it clear? Okay, so this question will be doing once we do the kingdom systems. Okay, all right. So I'm going to start now with the kingdom systems, and we are going to deal with 2, 3, 4, 5 and 6 kingdom system, and we have to emphasize on specially 2 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom, right? All right. So, who was the first one to propose a 2 kingdom, Linnaeus? Now, what is so special about Linnaeus? There were various thousands and thousands of scientists थे जिन्होंने plants और animals में divide किया था organisms को. But what is so special about Linnaeus? Why are we reading about Linnaeus? Why are we not reading about the other scientists? Why? Because Linnaeus ने प्लांट्स और एनिमल्स को एक स्टेटस दिया था, एक पोजीशन दी थी. किसकी पोजीशन? किंगडम की पोजीशन दी थी. किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. प्लांटी एनिमेलिया टर्म्स किसी और साइंटिस्ट ने लिनियस से पहले यूज नहीं किया था, राइट? सो लिनियस, so what is so special about Linnaeus? Linnaeus raised the status of plants and animals to kingdoms. Kingdom Plantae, Kingdom Animalia, right? So, Carolus Linnaeus, father of taxonomy, father of systematic botany, he proposed 2 kingdom system. He proposed 2 kingdom system, and what did he give? तो 2 किंगडम सिस्टम में लिनियस ने क्या किया? लिनियस ने 2 किंगडम में 2 किंगडम्स कौन सी दी? प्लांटी, एनिमेलिया. Is yellow color visible to all of you? Plantae, Animalia, right? Now, he also wrote many books. I almost remember 10 to 15 books of Linnaeus, but I am not going to bore you, All right. So, species plant, I'm not going to make this lecture boring. So, Species Plantarum, Systema Naturae are 2 very important books. Systema Naturae is very important. It is already being asked in NEET examination. And Living World के अंदर भी it is also mentioned that Linnaeus wrote the book Systema Naturae. Systema from the word systematics. Can you tell me systematics कौन सा word है? Is it a Greek word? Yes or no? Is systematics a Greek word? A Greek word, sorry. Is systematics a Greek word? It's a Latin word. It's a German word. Can you tell me? Systematics, it is a Latin word, right? It's a Latin word. All right. So, 2 kingdom system में Linnaeus ने क्या किया? Plantae Animalia में कैटेगराइज कर दिया. Linnaeus से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने Plantae Animalia टर्म यूज नहीं किया था, right? Okay. Now, Plantae Animalia में which all groups were placed by Linnaeus? Which all groups were placed by Linnaeus under Plantae and under Animalia? So, Animalia में what did he place? Animalia में रखा protozoans, then vertebrates, then invertebrates. What about Plantae? Plantae में कौन सा रखा? Plantae में the groups which are placed. Okay, one very important question also I am going to ask from this. Fungi, then blue-green algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, bacteria.
So tell me, NCERT की line से what is the feature which is unifying, जो जोड़ रहा है पूरे plant kingdom को, the feature which is unifying, which is common in the entire plant kingdom. Good afternoon, Ankit. So the feature which is unifying the entire this plant kingdom, it is presence of cell wall. Presence of cell wall. If I change my question and if I give you this, if I give you a question that is chemical nature of cell wall is unifying the plant kingdom, is chemical nature of cell wall unifying the plant kingdom? No. अगर मैं बोलूँ केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, इसका मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल सेम केमिकल से बनी हुई है. सो इट इज नॉट द केमिकल नेचर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, राइट? Presence of cell wall. Is that clear to everyone? All right. Let's go further with it. What are the demerits? What are the disadvantages of linear system? He was not able to distinguish, differentiate between prokaryote and eukaryote. Why? आप देखिए, look here, let's go further, let's go backwards. Why? Because we have to look at a very, very important question here. BGA and bacteria, they are prokaryote. Rest all are eukaryote. So, how can the prokaryotes and eukaryotes be placed in the same kingdom? It cannot be there, right? Then, he could not differentiate, means his system, the two kingdom system, it could not differentiate between uni and multi, because in plantae also there are various uni and various multicellular organisms, but he placed uni and multi in the same kingdom, that is plantae, right? Then he could not differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic, matlab the green algae and the fungi, they were placed in the same kingdom. How is it possible? Why are we placing the photosynthetic and non-photosynthetic organism in the same kingdom? How can we do that? But Linnaeus did, right? But he is called the father of taxonomy because at least he started with the classification, right? He was the one who laid the roots of the classification, right? Okay, so one more point here, there were certain dual organisms. Dual मतलब दोगले मतलब जो दोनों को रिजेंबल कर रहे हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. तो एज पर अप्लाइंग द लीनियस क्राइटेरिया, ये दोनों को रिजेंबल कर रहे थे, बट उसके लिए फॉर दैट वी हैव टू नो दैट व्हाट क्राइटेरिया दिस Linnaeus used to divide them into two kingdoms, Plantae and Animalia. So now I am going to tell you the criteria which Linnaeus used. Which criteria? The first criteria is what? Presence of what? Tell me. अभी बताया था मैंने आपको कि पहला क्राइटेरिया कौन सा था हमारा? कौन सा था पहला क्राइटेरिया बताइए? Presence of cell wall, right? So presence or absence of cell wall. Plantae में cell wall है, Animalia में cell wall नहीं है, right? Then what is the mode of nutrition? प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद मैं नीट का डिस्कस करने वाली हूं, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते हो. देन न्यूट्रिशन, देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ लोकोमोशन मींस इफ द लोकोमोशन इज देयर और नॉट. लोकोमोशन प्लांटी के अंदर एब्सेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ
contractile vacuole. Contractile vacuole that we are going to discuss in the coming lecture, which is a vacuole which is used in osmoregulation and excretion, right? Okay, so presence or absence of contractile vacuole, it's generally absent in the plants, and it is generally present in the animals. And then what about the last criteria? Response to external stimuli. Response to external stimuli. Plants में the consciousness is poorly developed, whereas in animals it is well developed. So now we are going to discuss the dual organisms. These were the 5 criteria, the 5 main criteria which were used by Linnaeus in his system. Now can you all tell me, out of these 5 criteria, which is the most important criteria which is used for Linnaeus system of classification? Suppose you get a question. So this was also a question in PYQ of NEET, that which is the main criteria of Linnaeus system. Can you all tell me in the chat box, please, the main criteria? Yes. Which was the main criteria? Linnaeus system. Out of these, if the main criteria is asked, the main, Sumit Roy, yes, the main criteria is your presence or absence of cell wall. Again, the main criteria is not the chemical nature of cell wall. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ the main criteria is chemical nature of cell wall, that means प्लांटी एनिमेलिया दोनों में सेल वॉल है और दोनों में अलग अलग केमिकल से बनी हुई है, बट एनिमेलिया में तो सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल इज नॉट देयर. दैट मीन्स द केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, इट कैन नॉट बी द मेन क्राइटेरिया. व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? Presence or absence of cell wall. Hi Ratnadeep. Alright, are you enjoying the session? I want to see some likes if you are enjoying the session. Yes, Saurav, yes, absolutely right. Alright. Hi Ratnadeep, hello. Alright. Okay, let's go further. So, that means now we can discuss what are those dual organisms. Can I write that? अब वो dual organisms कौन से हैं? तो अगर मैं dual organisms की बात करूं तो dual organisms मतलब दोगले जो दोनों को resemble कर रहे हैं. You're understanding? Good. So dual organisms है first Chlamydomonas. Chlamydomonas बेचारा, it is a dual organism. वो कह रहा बेचारा मैं तो फंस गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई मुझे कहाँ रखा जाए, मुझे प्लांटी में रखा जाए, मुझे एनिमेलिया में, भाई कहाँ हूँ मैं, तो इधर भी नहीं जा सकता उधर भी नहीं जा सकता, मैं फंस गया हूँ यार, क्योंकि मैं लिनियस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं दोनों को रिजेंबल कर रहा हूँ, मैं प्लांटी को भी रिजेंबल कर रहा हूँ और मैं एनिमेलिया को भी कर रहा हूँ. हाँ, लेकिन द मेन क्राइटेरिया इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. तो अल्टीमेटली क्लामाइडोमोनास में सेल वॉल है, तो रखा तो कहाँ जाएगा? रखा तो प्लांटी में ही जाएगा. बट if you apply the Linnaeus criteria, it's very difficult to classify the Chlamydomonas. How? Look here. Chlamydomonas, the mode of nutrition is autotrophic, right? Cell wall is present, so it is resembling plantae, but locomotion भी है, flagella भी है, flagella है, and contractile vacuole भी है. तो एनिमेलिया बनने का भी ये पूरा दावेदार है, right? And what about यूग्लिना? यूग्लिना कह रहा है मैं भी बीच का बिच्छू हूं, मैं भी डुअल ऑर्गेनिज्म हूं, राइट? यूग्लिना के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी को रिजेंबल कर रहा है, हमें पता है इट इज मिक्सोट्रॉफिक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑटोट्रॉफिक, राइट? देन एनिमेलिया को कैसे रिजेंबल कर रहा है? अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज देयर,
Then you have the flagella, locomotion हो सकता है, और cell wall is also absent. Then we also have slime molds. But how the slime molds resemble plants and animals, that we are going to discuss in the coming lectures when we talk about Protista. Right? So I think two kingdom system आपके mind में feed हो चुका है. What are the key points? Two kingdom given by Linnaeus, the father of taxonomy. The main criteria, presence or absence of cell wall. Then the demerits, it could not distinguish between prokaryote and eukaryote, uni and multi, photosynthetic and non-photosynthetic, and there are certain dual organisms like chlamydomonas, euglena and slime molds which are not fitting into the Linnaeus system as per the criteria given by the Linnaeus, right? Now, as this two kingdom system is found to be inadequate, so there was a urgent need for three kingdom system that was given by Haeckel, right? Sumit Roy, slime molds, they resemble plant also, animals also, and fungi also. So that we are going to discuss when we discuss Protista in the coming lectures. Okay? All right. Okay. So now we are on three kingdom given by Ernst Haeckel. He was a Russian. Haeckel. So Haeckel ने बोला कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स को दिक्कत आ रही है कि यार कहाँ प्लेस करें, यार परेशान है कि प्लांटी में प्लेस करें या फिर एनिमेलिया में प्लेस करें, तो वो परेशानी को दूर करने के लिए हैकेल ने बोला कि प्रोटिस्टा इट इज द गार्बेज कैन और द डस्टबिन ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन. सो प्रोटिस्टा को ही एस्टैब्लिश द किंगडम प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा को बोल दिया गया गार्बेज कैन और dustbin group of classification. So Haeckel said that which all organisms which are not we are not able to place them either in plantae or animalia, just simply dump into protista. Protista में dump कर देते हैं, right? Okay. So प्रोटिस्टा में अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, मतलब टिश्यू फॉर्मेशन नहीं दिखता. तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे? वेयर मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी? मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं थी. वेयर मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट. जहां पे मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो स्पेशलाइज्ड तरीके से एक्ट नहीं कर रहे थे ऑर्गेनिज्म, उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. तो जहां मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट था, उन ऑर्गेनिजम्स को दे वर प्लेस्ड अंडर, कहां प्लेस किया गया? दे वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू नेम द ऑर्गेनिजम्स जिनको प्लेस किया गया प्रोटिस्टा के अंदर. सो प्रोटिस्टा में ऑल प्रोकैरियोट, सारे बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया, slime molds, protozoans, and a very common mistake जो स्टूडेंट करता है, ध्यान से सुनिएगा, नीट का अगला क्वेश्चन यही है नीट में. प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव. यूनिसेलुलर यूकैरियोट. यूनिसेलुलर यूकैरियोट में आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर फंजाई एंड यूनिसेलुलर एल्गी. I am not talking about multicellular because
multicellular algae and multicellular fungi, they are still placed under plantae. This is a very common mistake which the students do because the concept is not clear. And who is going to clear your concepts? The core botanist, Miss Botanist. Yes, क्योंकि इतनी बारीकी से कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की ज्यादा चाहिए. राइट, सो मल्टीसेलुलर एल्गी, multicellular fungi are still placed under plantae, right? But यूनिसेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर फंजाई को प्लांटी से निकाल के कहाँ डंप कर दिया? प्रोटिस्टा में डंप कर दिया. राइट? ओके, कीप लाइकिंग द सेशन, and those who haven't subscribed the channel, please subscribe it, otherwise you are going to miss the updates from NEET Elixir. All right, so बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, क्योंकि जब आप पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा. ईस्ट, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम, ईस्ट इज प्लेस्ड अंडर. टू किंगडम के अकॉर्डिंग ईस्ट को कहां प्लेस किया? Very important question. I want to see the answers in the chat box. According to two kingdom, east was placed under, and according to three kingdom, east is placed under. This is a very important question जो बच्चा गलत करके आता है नीट एग्जामिनेशन के अंदर. तो अब आपको गलत नहीं करना है ये क्वेश्चन. हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखिए. वेरी गुड रत्नादीप. यस, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम, ईस्ट is placed under, किसके अंडर? yes, under plantae. But according to three kingdom, it is placed under protista. Why? Because yeast is a unicellular fungus. So by the time we finish the chapter, all the examples of NCERT, algae, fungi, everything will be on your tips, because I'll be taking also the special classes on the Plus platform for these chapters related to the questions. Everything will be on the tips, right? Yes, protista me, yes, three kingdom protista, very good. Nitya, I have superb crowd, superb students with me. Very good, Sumit. Yes. Okay. So, three kingdom, absolutely clear. And if three kingdom पे question आता है, majority organisms कौन से हैं? Which are the majority of organisms in three kingdom? The majority organisms in three kingdom, they are aquatic. That's why I'm going to use the color blue for aquatic. So, majority organisms जो हैक्टल ने place किए थे, majority, they were aquatic eukaryotes. Again a PYQ, a previous year question of NEET, which can be again asked in the examination, that majority organisms क्या थे? किसके अंदर? In what? In which system? Three kingdom system जो हैकल ने दिया, उसके अंदर the majority organisms, they were aquatic eukaryote. I hope three kingdom is absolutely clear, right? So now I am going further with four kingdom system, right? So three kingdom, protista, plantae, animalia. Protista is garbage can, this is already done. So four kingdom was given by Copeland. Yes, वैसे four kingdom के लिए majority books they also write Van Niel and Stenier, but Van Niel and Stenier कभी भी आपको options में नहीं दिखेगा. Why? Because the four kingdom system was fully developed by Copeland. तो options में कभी भी Van Niel and Stenier, because you know, देखो books तो हैं, but you need to have a right approach also, कि आपको पता होना चाहिए कि Van Niel and Stenier भी अगर आ रहा है ऑप्शन में, then you have to mark Copeland only, because the system was fully developed by Copeland. So Copeland only you have to mark in the question, right? देखो, पढ़ाई सब कोई कर रहा है,
मेहनत हर कोई कर रहा है, बट राइट स्ट्रैटेजी में पढ़ना, क्वेश्चन में दो ऑप्शन देखकर, दो राइट ऑप्शन देख के ज्यादा राइट कौन सा ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेगा, वही 360 on 360 लेकर आएगा। आपको पता है हर साल कोई ना कोई एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, बट हाउ टू जज दैट कंट्रोवर्सी, how do you know it's controversial, how to attempt the questions in section B, how to select out of two right options which is the better one, that you are going to get on NEET Elixir, right? Entertainment and quality teaching में फर्क होता है, and quality teaching you are going to get on NEET Elixir, right? Okay. What about now the four kingdom? The four kingdom system, it was given by Copeland. Actually Copeland, he gave the term mycota, तो उसने mycota term दिया था, right? Copeland ने which term? Copeland gave the term mycota, but later on this mycota term, it was changed to Monera by the scientists Doherty and Allen. So ये जो Monera term है, this Monera, so later on Doherty and Allen, they changed the term mycota. तो Copeland ने तो mycota term दिया था, but Doherty Allen ने they changed the term mycota into Monera. तो Monera में प्लेस क्या किया था भाई? बैक्टीरिया बन गए थे बादशाह, बैक्टीरिया को एक अलग सा किंगडम मिल गया था। बेचारे बैक्टीरिया वैसे भी इधर उधर जा रहे थे, बेचारे बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू टू किंगडम they were in plenty, right? According to three kingdom they were in Protista, but according to four kingdom the bacterias they were placed under, किसके अंडर? Monera. So all the prokaryotes they were placed under Monera. सारे prokaryotes Monera के अंडर रखे गए. So I think we are thorough with two kingdom, three kingdom and four kingdom. Okay, now let me give you a question, and a good question. Okay, Chlamydomonas is a unicellular alga. So according to two kingdom it is placed under plenty, but according to three kingdom it will be placed under Protista, right? So such kind of questions will be coming when we are done with biological and with plant kingdom. कि Chlamydomonas को टू किंगडम के अकॉर्डिंग हमने कहाँ रखा? हमने रखा किसके अंदर? हमने रखा प्लांटी के अंदर। बट थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग हमने किसके अंदर रखा? हमने रखा प्रोटिस्टा के अंदर। ऑल राइट, सो 2, 3 and 4 kingdoms are very much clear to you. Any doubts till here? Anybody wants to ask any doubts? Because then I'll proceed with the 5 kingdom system. So it's about 4 kingdom, the 5 kingdom system, right? Any doubts till here? No doubts? Okay, all right. Are you all understanding? Are you all understanding? Okay. All right. So, okay, 5 kingdom, can we start now? Right. So, 5 kingdom, it was given by R.H. Whitaker. NCERT के अंदर year भी mentioned है. The year is also mentioned. NCERT, because year can be asked. Sometimes they ask मेंडल ने कब काम किया? From 1856 to 1863, right? बोलेंगे कि बोलेंगे न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ? 1831, राइट? बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब है? कौन से एरा में? 1950s, राइट? बोलेंगे टिश्यू कल्चर का एरा कौन सा है? 1950s. देन सेल थ्योरी 1838 to 1839, राइट? देन व्हाट एल्स?
What else years are there in NCERT? कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी बॉडी कब डिस्कवर किया? 1898, राइट. जूलियस वॉन्सैक ने हाइड्रोपोनिक्स कब किया? 1860. जोसेफ प्रीस्टली ने फोटोसिंथेसिस में कब एक्सपेरिमेंट किया? 1774. सो ईयर्स आपके, जैसे मेरे ईयर्स यहाँ पे हैं इधर. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब साइन हुआ? 1986. भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984. वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974. एयर एक्ट 81, amended 87. So these everything, the years should be here. I don't have any book in front of me. Okay, the years, everything, botany should be here and here, right? Okay. So five kingdom system, it was given by R.H. Whitaker, and what kingdom he introduced? We already have Monera, we have Protista, and we have Plantae, we have Animalia. What kingdom is left? We are left with fungi. So he established the kingdom fungi, and what is the main criteria? Right, the main criteria as per NCERT, all of these are the main criterias, right? राजा सब है, लेकिन राजा में से महाराजा कौन है? राजा तो सभी है. मतलब अगर मुझे एग्जाम में ऑप्शन है, the main criterias used are, वहां पे 1 2 3 जो मर्जी ऑप्शन है, more than one option is correct भी है. I will go for more than one option is correct according to as per NCERT. All of them are the main criteria. But let us assume that there is a dire situation when you do not have more than one option is correct or all of these. आपके पास more than one option is correct या all of these option नहीं है. मान लेते हैं नहीं है ऑप्शन आपके पास, then if you are bound to select कि इसमें राजा में महाराजा कौन है, right? So the main criteria, it is mode of nutrition. तो राजा में महाराजा mode of nutrition है. But अगर मेरे पास more than one option is correct या all of these मेरे पास option है, so I will go for more than one option is correct या all of these. If more than one option is correct या all of these मेरे पास option नहीं है, if I am in a dire situation, I'm just bound to select one option कि out of these 5 options I have to select one option, I will go for mode of nutrition, right? Last thing in the lecture now that I would like to conclude, very very important, mode of reproduction. It is controversial. Actually, it is not a criteria of 5 kingdom. So agar if you get a question out of these criterias, which of the following is not the criteria of 5 kingdom, you are going to answer mode of reproduction. And agar if you have the question which of the following is not the criteria of 5 kingdom, and the options are cell structure, mode of reproduction, mode of nutrition, and reserve food, then what you are going to answer? Now if you have the options, which options? You have a very very important question that can be asked in the NEET examination. Look at the question. अगर ये पांचों क्राइटेरिया में सेलेक्ट करना आ रहा है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं था, तो वो है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बट अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया और अगर क्वेश्चन आया क्या, अगर एग्जाम में ऑप्शन है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, लेट अस से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस से reproduction, which of the following is not the criteria? Reserve food material and cell structure. Now answer in the chat box. Tell me, अगर ये question आता है, which of the following is not the criteria of 5 kingdom system? So what are you going to answer? Not the criteria. इनमें से कौन सा criteria नहीं है? Chat box में कंप्लीट कोर्स 11th का चल रहा है और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं स्वाति SWATI फॉर एनरोलिंग इन माय प्लस सब्सक्रिप्शन. मेरे प्लस कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 1 अगस्त विद डॉक्टर सचिन कपूर एंड अनूप वशिष्ठ. सो 1 अगस्त से हम लॉन्च कर रहे हैं प्लस में डिटेल कोर्सेज. यू कैन यूज द कोड स्वाति SWATI फॉर गेटिंग इनटू प्लस.
हाँ जी, आंसर बताइए। रिजर्व फूड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, रिजर्व फूड। दैट मीन्स दो गलत ऑप्शंस में से ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? गलत तो रिप्रोडक्शन वाला भी है, रिजर्व फूड वाला भी है, लेकिन कम से कम रिप्रोडक्शन वाला इट्स मेंशन इन द एनसीईआरटी, राइट। अब अगर इसी में से पूछ लिया कि इन 5 में से कौन सा है, देन आई विल आंसर मोड ऑफ reproduction, which was actually not the criteria. All right, so before going, we are going to discuss 5 and 6 kingdom in the next class. Then अभी हमने थोड़ा introduction लिया है. You can join our Telegram channel for YouTube classes, NEET Elixir, where you'll be getting the PDFs and the handwritten notes of our lectures, right? And you can use my code Swati, that is SWATI, for getting into the Plus subscription, where we'll be launching detailed courses for Plus subscription starting from 1st of August, right? So अगर अभी भी आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जल्दी से फटाफट पहले तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए to avail our special classes. Tomorrow I'll be taking special class at 7 p.m. on most important questions of sexual reproduction, right? So Telegram channel join करना है, right? Unacademy learner app आपको डाउनलोड करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आना है, कोड यूज करना है स्वाति SWATI. ओके, अगर आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप अभी डाउनलोड कर लिया है तो आप मेरा प्रोफाइल स्वाति बत्रा जाके आप फॉलो करेंगे. जब आप फॉलो करेंगे आपको सारी अपडेट्स मेरी स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज की मिल जाएंगी, राइट? ऑल राइट, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड कितने का 3 मिनट का ब्रेक लेना है और 3 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे डॉक्टर सचिन कपूर. कौन से चैप्टर के साथ? एनिमल किंगडम, राइट? लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.